Hello students, so again I am here through a YouTube video to explain the ionic bond and covalent bond. If you can notice in the previous video, you talked or we discussed why do atoms combine together, why the atoms undergo the chemical combination. Then we further studied reason was that first the atom wants to get the octet in its outermost shell. And second reason is that atom wants to go in its lower energy state. Then we talked there are two different methods. First, ionic bond formation I had discussed with you. I had covered can ionic bond is formed by the transfer of electron from one atom to another. And when I say by the transfer of electron from one atom to another, remember generally a metal atom and a non-metal atom. Metal atom, what is it? Which has generally metal, which has 1, 2 or 3 electrons in its outermost shell, and they acquire stability with the loss of electron. And non-metal, generally they have 5, 6, 7 electrons in their outermost shell, and they gain stability by the gain of electron. Like just for a reason, ionic bond by transference of electron. You just see now, this is sodium. It has a configuration of 2, 8, 1. It has 1 electron. It shifts it to chlorine. Chlorine 2, 8, 7. So now, with the transfer of this electron, when I say transfer of electron takes place, so with the transfer of this electron, sodium gets a positive charge because it releases the electron, and chlorine gets a negative charge because it's gained the electron. And we get electrostatic force of attraction. What force? Electrostatic force of attraction. And you should remember these are the strongest force of attraction right now. Till date, ये strongest you can say forces of attractions मानी जाती हैं. Electrostatic force of attractions. It means that ये compound बना, इसमें आपको दो ions नजर आएंगे. You will get one Na positive ion and you will get another Cl negative ion. So these compounds are also called as ionic compounds, and you can also call them as electrovalent compounds. And I just want you should note down one more point here, very important. You note it down. The charges ions have on it, the charges ions get after transfer of electron is called as electrovalency. What we call electrovalency. Like this is the sodium, it releases 1 electron, so this sodium gets a positive charge, so its electrovalency comes to be +1, and since Cl gets a negative charge, so its electrovalency comes to be -1. Remember, the quantity of charge an ion gets is called its electrovalency. Now, it's very clear to form this compound, to get this compound, there is transfer of electron from one atom to another. Right? Metal is going to release the electron and non-metal is going to gain the electron. So, my dear bachcho, there are certain factors which affects the formation of ionic compounds. या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. मैंने क्या बोला आपको? आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है और दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है. अब जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, द एटम व्हिच इज गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. And that energy is known as, is considered as ionization enthalpy. That energy is called as, is considered as ionization enthalpy. इसको हम ionization enthalpy करके बुलाएंगे. Like suppose किया, मैं इसी का एग्जांपल लेकर के चलूंगा. This sodium wants to release the electron. This is Na. It wants to release the electron to form Na positive ion. It needs energy. पढ़ा है आप लोगों ने
आप लोग ऑलरेडी जानते हो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वी नीड एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो द फेवरेबल फैक्टर for the formation of ionic bond, those metals form the ionic bond comfortably which has low ionization enthalpy. It means that when they have low ionization enthalpy, they can release the electron comfortably and this will result in the formation of cation easily and so automatically ionic bond can be easily formed. तो मैं आपको ये बता रहा हूं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हमें हेल्प करने वाले हैं, विच फैक्टर्स कैन हेल्प अस. उसमें सबसे पहला फैक्टर आपके पास आएगा, द वेरी फर्स्ट फैक्टर आई एम टेलिंग दैट वो एटम, वो मेटल एटम जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, कैटायन आसानी से बनाएगा, तो उसका आयनिक बॉन्ड भी आसानी से बनेगा. मींस आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें ऐसा मेटल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस होगा. इसी तरीके से देयर इज अनदर, व्हाट इज इट, दिस इज नॉन मेटल एंड दिस नॉन मेटल इज टू टेक इलेक्ट्रॉन. और आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो भी एनर्जी चेंज होता है एंड दैट एनर्जी चेंज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या एनर्जी चेंजेस आए एंड जनरली हम इसको नेगेटिव वैल्यू देते हैं. क्यों? क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनर्जी को रिलीज करता है. तो एक जनरल सी बात समझिए, जैसे आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, Cl नेगेटिव बना, इट रिलीजेस एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन. This is considered as electron gain enthalpy. अब एक सीधा सा लॉजिक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा. अगर से इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन किया ये ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो हम बोलेंगे इट विल हैव मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो रिमेंबर दोज मेटल्स व्हिच हैव more negative, sorry, I repeat, those non-metals which have more negative electron gain enthalpy accept the electron easily, right? And that's why they favor the formation of ionic compounds. मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नॉन मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, मींस वो एनायंस आसानी से बनाएंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में उतने ही ज्यादा हेल्प करेंगे. अब थर्ड फैक्टर, तो पहला फैक्टर मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए. दूसरा फैक्टर नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए. अब तीसरा फैक्टर क्या आएगा भैया, जब ये दो आयंस बन जाएंगे इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा. और मेरे बच्चों रिमेंबर, व्हेनेवर एनी टू एटम्स और एनी टू आयंस गेट बॉन्डेड टुगेदर, these two ions get bonded together, or every time energy is released and this is called lattice enthalpy. Whenever two atoms bonds or whenever two ions bond, some energy is released and this energy is called as lattice enthalpy. इस energy को हम lattice enthalpy बोलेंगे. और इट्स वेरी क्लियर, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज्यादा लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगा, माय डियर आयंस उतना लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे एंड दे विल बिकम मोर स्टेबल. So more lattice enthalpy means more energy is released. Molecule goes to lower energy state and it brings the extra stability. It causes the extra stability. So these are really very important factors which affects the formation of ionic bond. पहला, metal जो bond बनाने के लिए चला है, it should have low ionization enthalpy. Non-metal जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, it should have more negative electron gain enthalpy so that it can accept the electron and anion can be easily formed. And when cation and anion formed,
they will interact, उनके बीच में forces develop होगा, energy release होगा, more lattice enthalpy, more energy release, ions go to lower energy state and it brings the extra stability. So these are really very important key factors which will affect the formation of ionic bond. These are important factors which I had to discuss regarding the ionic bond. अब important, this is the section of covalent bond. Now what do we find in case of covalent bond? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? मैंने आपसे बताया था एटम कभी भी कंबाइन होगा टू गेट ऑक्टेट इन इट्स आउटर मोशन। यहां ऑक्टेट पूरा हुआ इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से। इन केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड बनने का क्या अर्थ है? एटम विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लाइक सपोज किया, एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस इज वी हैव क्लोरीन एटम। इफ आई टॉक अबाउट दिस क्लोरीन एटम, it has atomic number 17. It has a configuration of 2,8,7. This is I am talking about chlorine, and this chlorine has a configuration of 2,8,7. Now tell me, how many electron chlorine needs to become stable? Come on, Arya. Yes, chlorine needs 1 electron to become stable. अब अगर आपके पास 2 क्लोरीन एटम ऐसे आ गए, if you get 2 chlorine atoms, आपके पास ऐसे 2 क्लोरीन एटम आ गए और भैया दोनों को एक-एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल। अब अगर आप कहेंगे सर ठीक है, एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, करवा दो। जिसने रिलीज किया उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, जिसको मिल गया उसका ऑक्टेट हो गया, जिसको मिल गया उसके बल्ले बल्ले, और दूसरा बेचारा ऐसे वेट कर रहा है। तो दिस इज अनदर वे। In place of transfer of electron, what the 2 chlorine atoms will do, because 2 chlorine atoms, they have 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They have 7 electrons in their outermost shell. They need only 1 electron to complete their octet. It means both the chlorine atoms will share the electron mutually. Mutual sharing will take place, and mutual sharing, I just want you should note down, it means that 2 atoms share the electrons in equal number to complete their octet. ये मैंने पॉइंट लिखा है। Each atom gives equal number of electron. ये इसका मतलब होता है mutual sharing of electron, equal number of electrons. तो 2 क्लोरीन एटम आए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7. It needs only 1 electron. This is 1 chlorine atom, this is another chlorine atom. They both share 1 electron each. अब आप चेक करो, ये shared electron pair है. This is called shared electron pair. You count it. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर दोनों क्लोरीन एटम का अपना एक इफेक्ट होगा, दोनों का अपना कंट्रोल होगा। And as a result, octet of both the chlorine atoms are completed. दोनों क्लोरीन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। Let us consider one more example. Let us talk about oxygen. Atomic number 8, configuration 2,6. अब बताइए इस ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल? करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ऐसे 2 ऑक्सीजन आ गए, ये दूसरा भी ऑक्सीजन आ गया 2,6। अब ट्रांसफर नहीं हो गया, इन प्लेस ऑफ ट्रांसफर अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो दोनों ऑक्सीजन एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दे विल शेयर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिचुएशन क्या बनेगा? इस ऑक्सीजन के पास 2, 2, 4, 2, 6. It was having 6 electrons. Similarly, this oxygen was also having 2, 4, 6 electrons. Now the 2 oxygen atom, this is 1 oxygen atom, this is another oxygen atom. They share both 2 electrons each. In total 4 electrons are shared. Equal sharing होगा। एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। दिस इज द शेयर्ड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
Now you count 4 to 6 to 8. इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. 4 plus 2, 6 plus 2, 8 means octet of both the oxygen atoms are completed. Right, my dear? And similarly, there is another case which I am talking with you. Let us talk about nitrogen atomic number 7, 2,5. Outer shell 5. कितने इलेक्ट्रॉन्स? आपको मालूम है ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये नाइट्रोजन के दो एटम्स आ गए, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है. सिचुएशन क्या बनेगी? दिस इज वन नाइट्रोजन. इसके देखो जस्ट कंसिडर हियर 1 2 3 4 5. This is another nitrogen 1 2 3 4 5. They both need 3 electrons. What they do? दोनों नाइट्रोजन अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. Now when 3 electrons are shared, in total 6 electrons are shared. Now when 6 electrons are shared, so because of these 6 electrons, what do we find? 6 7 8. Nitrogen octet is completed. Nitrogen 6 7 8. For nitrogen octet is completed. This is called a bond is formed by mutual sharing of electron. दोनों एटम्स ने अपने में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और शेयरिंग के बाद दोनों एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ऑक्टेट इन दिस केस क्लोरीन इज कंप्लीटेड, ऑक्टेट इन दिस केस ऑक्सीजन इज कंप्लीटेड, ऑक्टेट इन दिस केस ऑफ नाइट्रोजन इज कंप्लीटेड. बट सी नाउ टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट the two chlorine atoms share only 2 electrons, or you can say 1 electron pair. So when the two atoms share only 1 electron pair, we say this results in the formation of a single covalent bond. This results in the formation of a single covalent bond. This is oxygen. It shares total 4 electron, or you can say total 4 कैसे? दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए. और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 को आप 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी बुला सकते हो. These are 2 electron pairs. So between 2 oxygen we get double bond. This is called double covalent bond. And third, this is nitrogen. In total, how many electrons? Come on, tell me. Yes, in total 6 electrons are shared, or you can say 3 electron pairs are shared. 3 electrons pair शेयर हुआ तो इन दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में आपको मिलेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सो वी हैव 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. द वन इज कॉल्ड ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, द अदर इज कॉल्ड ए डबल कोवलेंट बॉन्ड, द थर्ड इज कॉल्ड ए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. सो बेसिकली विद दिस वी एंड दैट whenever there is a bond formation, जब एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा वो 2 तरीके से कर सकता है. आइदर बाय फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एंड सेकंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें दोनों एटम्स इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. थैंक यू.